Good morning, class 10 students. Welcome to chemistry lecture. Let us continue with the NCERT question. तो start करते हैं question number 5 से. Question है मेरे पास, an atom has electronic configuration 287. So first है, what is the atomic number of this element? So it is very easy. Atomic number find करना है, electronic configuration दी हुई है. So it's simply what 2 plus 8 plus 7. So it gives you 17. So atomic number क्या आ गया? 17. Now he's asking in the B part, to which of the following elements will it be chemically similar? तो chemically similar बच्चे क्या होते हैं? Elements which are present in the same group. तो first मेरे पास है नाइट्रोजन 7 atomic number. So उसकी configuration क्या आएगी? 2 5. Next है फ्लोरीन 2 7. Phosphorus we have 2 8 and we have 5. ठीक है. And last is argon 18. So it will be 2 8 8. अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या दी है? 2 8 7. तो हमने क्या देखना है कि जो केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं दे हैव सेम आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन. तो इनमें से सेम आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन किसकी दिख रही है? फ्लोरीन की. सो आंसर विल बी फ्लोरीन विल बी केमिकली सिमिलर टू दिस जो एलिमेंट आपको गिवन है. सो मूविंग फॉरवर्ड टू 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी इज शोन. तो हमें यहाँ पे पोजीशन शोन है ए बी एंड सी की ग्रुप 16 में एंड ग्रुप 17 में. सो नाउ ही इज आस्किंग स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल. तो ए कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे. तो इट इज़ इन ग्रुप 17. ग्रुप 17 इज़ ऑन द राइट साइड. ठीक है. सो इट बिलोंग्स टू नॉन मेटल क्योंकि ग्रुप 17 है तो उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इट विल गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करते हैं? नॉन मेटल. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए इज़ अ नॉन मेटल. नेक्स्ट वी हैव बी पार्ट. सो बी पार्ट इज state whether C is more reactive or less reactive than A. So now he is asking among A and C कि कौन ज़्यादा reactive है. ठीक है. So what happen is in case of non-metals as we move down the group chemical reactivity decreases. So जैसे जैसे हम non-metals में down the group जाते हैं chemical reactivity कम होती जाती है. क्यों कम होती जाती है? क्योंकि जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज इंक्रीज है तो उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है टू गेन इलेक्ट्रॉन. सो जो ऊपर नॉन मेटल्स होते हैं दे आर क्वाइट मोर रिएक्टिव. सो नाउ क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए. स्टेट वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव. तो हमारा क्या आ जाएगा? सी इज़ less reactive than A. Why? Because down the group in case of non-metals reactivity decreases with the increase in size. ठीक है. with the increase in size they have less tendency to gain electrons or they are less electronegative. Clear? Next is C part. We have C part. Question है will C be larger or smaller in size than B? So comparison between this. So we know that as we move along the period size क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो among B and C किसका साइज स्मॉल होगा? C का, क्योंकि along a period size decreases. So question था will C be larger or smaller in size? तो our answer will be C is smaller than B. Why? You have to write reason also because when we move from left to right in a period atomic size decreases. Okay. So next D part. D part is which type of ion, cation or anion will be formed by element A. अब हमें पता है एलिमेंट ए क्या है? नॉन मेटल. सो नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है? टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. तो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा सो दे विल बी फॉर्मिंग व्हाट? एनाइंस. क्लियर?
So our answer will be what type of ions will it form? It will form N9. Reason being, it will gain electron to complete its octet. Okay, next question we are having. Moving to question number 7th क्वेश्चन है, नाइट्रोजन दिया है एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस दिया है एटॉमिक नंबर 15 एंड गिवन इट बिलोंग टू ग्रुप 15 of the periodic table. So it's very easy question. Write the electronic configuration of these two elements. So first of all, I'm having nitrogen 7 atomic number, so 2 and 5, and phosphorus we have 15 atomic number. So first part हमारा done है. Write down the electronic configuration. Now second part is very important here. He is asking which of the following will be more electronegative. अब electronegative क्या होता है? It is a tendency to attract a shared pair of electron. Means जो element है वो shared pair को कितना attract करता है. In short, gain a pair of electron. So now we know that as the size is increasing, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. मीन्स डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases. So among nitrogen and phosphorus, which will be more electronegative? Nitrogen will be more electronegative. And you have to write reason, because down the group electronegativity decreases in case of non-metals. Okay.